Right. Good morning, guys. So yes, good session for India, considering where the match was at the end of day one. As usual, Bumrah got the ball rolling to get rid of Manas Labuschagne, and finally, Mohammad Siraj stepped up. And the first star solely belonged to India when Australia were 39 for 4, two big wickets of Travis Head and Sam Constance. Now, Sam Constance, I know, still the second match, but big wicket is liye hai because he tends to get runs very quickly. He can take away the game in a jiffy, and he played that reverse ramp off Bumrah. So yes, him getting Siraj getting rid of Constance was a big moment in the day, and in that over he got rid of Travis Head also. That is something with Siraj and New Year Test match, which I also tweeted. Siraj tends to find this best in a New Year Test match. He did the same, I remember, against South Africa last year in the New Year Test match, if I'm not wrong, in Centurion. Uh, But then again, Steve Smith has found his groove, guys. Steve Smith looked like $1 million on this pitch. His back foot shots were a sight to behold. Matlab, the way he used the back foot cut, the back foot ramp, whatever you call it. Steve Smith has found his hands. Uh, so yes, after 39 for 4, India were really pumped up. Or उस time पे Beau Webster and Steve Smith, Beau Webster being the debutant, looked very solid. I mean, if you have played more than 90 first class matches and if you're averaging around 37, 38 with the bat, you can play. If you have come into international cricket after going through the grind in first class in domestic cricket, तो हाँ, you can play. Beau Webster ने दिखा दिया कि he should have played much earlier. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श को एक लंबा रोप दिया, but boy, Beau Webster looked very, 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 very promising. And I don't think ज़्यादा ट्रबल में, I just think two balls ऐसे रहे होंगे against Beau Webster जिसमें he looked slightly in trouble. एक जो बुमराह ने अंदर the sharp in decker which he left it very closely, it was मतलब कि आउट होते होते बचा, and one full ball from Reddy. Apart from that, I have not seen Beau Webster be in trouble. I think there is a slight vulnerability because he sort of tends to plonk his front foot and play around it. But हाँ, अभी unknown commodity है international cricket में, so I'm sure teams will work out. I'm sure India will work out where to bowl at him at lunch. I still think, despite picking up 4 wickets, uh, I still think Australia's thoda is slightly ahead, primarily because उनका लोअर ऑर्डर हैज बीन इन गुड डिसेंट फॉर्म पिछले 2 मैच में. लोअर ऑर्डर ने ही रन्स बनाए हैं. ब्रिस्बेन में भी लोअर ऑर्डर ने ही रन्स बनाए थे. मेलबर्न में भी लोअर ऑर्डर ने ही रन्स बनाए थे. तो आई स्टिल थिंक कि लोअर ऑर्डर, कंसिडरिंग दैट दे आर इन फॉर्म, तो यस, अभी भी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा तो अहेड है ही. बट गुड मॉर्निंग फॉर इंडिया. Of course, they dominated. Bumrah leading the charge, Siraj getting the ball, and as expected, the pitch has quickened up. So the edges are also carrying now nicely. Rahul was very solid in the slips. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था प्रसिद्ध कृष्णा के पहला ओवर तो ठीक था, बट देन वेवर्ड उसके, आई मीन प्रसिद्ध कृष्णा के साथ यही प्रॉब्लम रहा है कि टेंड्स टू बॉल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्टंप, थोड़ा वेवर्ड रहा है. एंड स्मिथ रियली गॉट इनटू हिम विद 6 and a 4. But then he came back. Prasidh came back to dismiss Smith, and that, I think, made the game once again go back in the balance. Yes, that wicket of Smith was a very important one for India just before the break. India, तो when they bat, तो definitely before the breaks, he would out हो जाते हैं उनके batsmen. So it was definitely a good sight when Prasidh got rid of Smith. एक ओवर जडेजा ने किया था, आई डिडंट सी एनीथिंग. मतलब कि आई एम श्योर आपने भी देखा ही होगा, मैच देख रहे हो, कि कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई टर्न एंड बाउंस तो है नहीं. आई मीन बाउंस होगा, टर्न तो डेफिनेटली नहीं है पिच पे. इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द फास्ट बॉलर्स.
And of course, once again, the lack of a genuine fourth fast bowler is a cause of concern for India. बट ये तो कॉज ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज रहा है कि मीन हमेशा लगता है कि एक एंड से इफ बुमराह इज नॉट बॉलिंग, चलो ठीक है सिराज ने इस मैच में डाला है एक, अगर एक बुमराह इज नॉट बॉलिंग तो वो एक फ्री एंड हो जाता है. Reddy, for all his promise with the bat, has not really impressed with the ball. मतलब एक दो बॉल ठीक होता है बट फिर वही है, अभी he has a lot of work to do as far as his bowling is concerned. So that is one area where फिर वही selection issues है कि if the pitch was the way it is, should India have gone with four regular pacers instead of playing both Ashwin and Jadeja? Sorry, Washington and Jadeja in this match. बट है अब जो टीम है, if this is what it is, so we expected, like we wanted India to pick up at least 3 to 4 wickets. They have picked 4 wickets, but Australia have also uh, not thrown in the towel. क्यों Australia? Why will Australia throw in the towel? 101 for 5, 92 runs ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है अभी इस सेशन में. Run rate is also pretty impressive, and run rate इसलिए impressive है because both Prasidh Krishna and Nitish Reddy did not exert the control what Jasprit Bumrah wanted. So at the end of the session, अभी भी मतलब कि they just like 80 runs behind, 80 odd runs behind, and I still think Australia थोड़ा ahead है इस मैच में. I would ideally after lunch, if India do not get early wickets, so by the end of this, the next session, when the teams go off for tea, तो Australia definitely lead में रहेगी. And this is something that India would not want. When after the first hour, when 39 for 4 हो गया था, तो like it was really all pumped up. मजा ही आ गया था. But ठीक है, when Beau Webster played well. Let's see what tactics they come and how Bumrah will be back. He will start proceedings after lunch. तो rest मिल जाएगा. And that Bumrah spell, that first spell after lunch, will be important. बहुत crucial होगा. कैचिंग बहुत अच्छी रही है इंडिया की स्लिप्स में. राहुल हैज बीन वेरी सॉलिड. सो यस, आई मीन वेकिंग अप 5 बजे सुबह उठ के देखना तो सार्थक तो हो ही गया. थोड़े रन्स में कंट्रोल बनता है, बट ये ऐसा ऐसी पिच है कि अगर आप टुक 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 करके खेलते रहो तो वन बॉल विल हैव योर नेम. सो ऑस्ट्रेलिया हैव आल्सो प्लेड देयर शॉट्स, नॉट रेकलेस शॉट्स, बट थोड़ा सेटल डाउन तो पिच लग रहा है, बट क्विक इनफ हो गया. आई मीन दिस बो वेबस्टर एंड एलेक्स कैरी अभी क्रीज पे है. दिस इज अ क्रूशियल पार्टनरशिप. दिस इज अ पार्टनरशिप दैट इंडिया वुड रियली वांट टू ब्रेक. इसके बाद फिर बॉलर शुरू हो जाते हैं, कमिंस, स्टार्क, लायन एंड बोलैंड. तो द लास्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग पेयर जो है, एंड हेंस आई एम सेइंग कि बुमराह का जो स्पेल है आफ्टर लंच, द फर्स्ट स्पेल दैट बुमराह bowls, possibly with Siraj, yeah, with Prasidh, since Prasidh picked up a wicket in his last over. So that spell will be very crucial. The first hour after lunch will be very very crucial to determine कि किस तरफ ये मैच जा रहा है. And yes, so that's about the summary of the match. कि गुड फाइट बैक फ्रॉम इंडिया, बट थोड़ा कंट्रोल लैकिंग था इस सेशन में. रन्स were flowing along easily, especially in the second hour, especially after they were 39 for 4. So it all boils down to once again selection कि क्या India could have gone in with a regular fourth fast bowler instead of one of Washington or Jadeja. That is the control that has been lacking. That is the control that somehow the team managed in Perth because of Bumrah's brilliance. But yeah, fifth test match है. Bumrah has been carrying massive workloads, तो उसका impact तो आना ही है. It's a shorter turnaround time between the last match and this match. Uh, but yes, थोड़ा रेस्ट अभी मिल जाएगा. It all depends on, like I said, the first hour after lunch. कि फर्स्ट आवर आफ्टर लंच कैसा जाता है, and that will, I think, determine the course of the match. This was just very quick
recap of whatever happened. Since सुबह उठ ही गया था, मैच देख ही रहा था, so might as well come live and share my thoughts. So now yes, अब चाहता हूँ थोड़ा चाय वाय पी के रिलैक्स होके I'll be waiting for the next session. Advantage Australia, I would still say it is the what you say, the worried Indian fan in me saying कि बहुत मुश्किल हुआ है अभी तक लोअर ऑर्डर और टेल को आउट करना. इफ अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तब तो फिर ये मैच भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है. द मैक्सिमम लीड दैट इंडिया कैन अफोर्ड टू कंसीड वुड बी आई थिंक 30 रन्स, कंसिडरिंग कि हमारी बैटिंग कैसे, और बैटिंग फिर से तो करनी ही है. 30-40 रन मैक्सिमम तक हम कंसीड कर सकते हैं, तो विच इज लाइक अराउंड 220-225 तक अगर ऑस्ट्रेलिया को हमने डिसमिस कर दिया तो वी कैन स्टिल होप. बट हाँ, लोअर ऑर्डर को आउट करना हैज बीन अ प्रॉब्लम. बुमराह विल हैव टू बी एट हिज बेस्ट. होपफुली सिराज एंड प्रसिद्ध गेट द रेस्ट, बिकॉज अभी 1 घंटा लंच के बाद विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कुड डिसाइड द कोर्स ऑफ दिस मैच एंड दिस सीरीज. होपफुली when we meet possibly at tea या फिर lunch या फिर end of the day's play, uh, India would have had, we would have some good news with, and हम थोड़े और excitement और enthusiasm से बातें करेंगे. Till then ठीक है, let's hope, let's wait and watch what happens after lunch. Thank you so much for joining. This was just a very quick summary. Please like, comment, subscribe. जो normal shenanigans है वो आप कर देना. Thank you so much for joining. Uh, Hopefully when we join next time, थोड़ा better mood रहेगा and we would be in a position of ascendancy. Thanks a lot. चलो, good morning.